Yes, hello Abhinav, welcome on YourPedia platform, and let's start your power plant snap Yes, for sir. your ONGC interviews. Yes, sir. So Abhinav, power plant may let me start with a factor which is very important for a power plant, known as the reheat factor. What is that? The reheat factor is defined as the overall efficiency divided by the single stage efficiency. Overall efficiency by single stage efficiency. Yes, sir. Or it can also be defined as the summation of enthalpy changes in per stage divided by overall enthalpy change. Achha, reheating, why actually? For what purpose we carry out reheating? Sir, in gas turbine or steam turbine? Steam turbine. Steam turbine, sir. Reheating is, sir, essentially done so that we can increase the scope of regeneration. Because reheating itself, if we do reheating alone, the efficiency actually decreases. But if we do reheating in combination with the regeneration, then we can increase the efficiency of the plant. How reheating is going to increase the scope of regeneration? Sir, it will increase the scope of regeneration. How would we increase? Sir, because when we are reheating, there we have like two turbine exits. So regeneration is basically a heat exchanger which is used to heat the feed water to support the boiler. So for regeneration, we are going to take heat. We need to supply the heat, na? Yes, sir. Then that is going to increase the heat addition, heat supply to the what you can say boiler. Yes, sir. So how it is going to increase the regeneration or scope of regeneration? Sir, because we are having multiple streams through which we can transfer heat to the inlet of the boiler. Earlier, we had like a single stream, single turbine exit. But when we are reheating, we are having multiple sources. Means you are, and sir, also reheating will increase, the temperature of the exit also. Temperature at the exit of turbine. Yes, sir. You heard about combined cycles, combined cycle power plant? Yes, sir. क्या होते हैं? Sir, it is basically like we are using the waste heat of one cycle which is operating at a higher temperatures than the other cycle. To we can use that rejected heat as heat added to the lower cycle. You heard about topping cycle and bottoming cycle. What is the difference between these two cycles, topping and bottoming cycle? Sir, in combined cycle, only the top cycle is called the topping cycle and the lower cycle is called the bottoming cycle. For example, if we are using gas turbine plant, it usually operates at higher temperatures, much higher temperatures than steam power plant. So we can use that heat rejected and the heat added in the steam power plant. So this is the bottoming cycle and the gas turbine is the topping cycle. अच्छा, ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स क्या होते हैं अभी? Supercritical boilers. Sorry, sir, I don't know. You have not heard about supercritical boiler? Not really, sir. I have not read about it, but no, sir. आपको क्रिटिकल पॉइंट तो जरूर पता होगा. क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? Yes, sir. तो बताओ क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? Critical point is that point where we cannot differentiate between the liquid and vapor form. And कितना होता है? How much is the critical point for water? For water, it is 373 degrees Celsius and 221 bar. Yes, sir. ठीक है. तो in thermal power plant we carry out pulverization of coal. So what do you understand by pulverization of coal?
Sir, I don't remember. Which type of coal is considered as the best coal? Sorry, sir, I have not read about it. What is the role of cooling tower in a thermal power plant? Cooling tower is used to cool a coolant liquid, which is like mostly water, in which all the waste, wherever we want to reduce the temperature of a liquid in a, say, any plant, first we use water in a heat exchanger to reduce, transfer the heat. And then this heated water is taken to a cooling tower, where with the use of evaporation, we cool this water and it is circulated back to the plant. Cooling tower, there is a term which is very much related with cooling tower. Range of a cooling tower, range and approach. So can you tell me something about these two terms? What is the range of a cooling tower and what is approach of a cooling tower? No, sir, I have not read about it. Achha, how heat transfer takes place in a cooling tower? Sir, through evaporation. Like water is. What is the minimum temperature of the coolant we can get? Water we can get in cooling tower? Sir, it is atmospheric temperature. Atmospheric temperature? Yes, sir. Whatever is the temperature near the cooling tower of the air. But actually, it is a WBT. Yes, sir. No dry bulb temperature. Yes, sir. Why? So because sir, there is also moisture in the air surrounding the cooling tower. So some heat will be taken by that moisture also. Okay. What is work ratio? Madam. So work ratio is the ratio of net work done upon positive work done. Like in terms of numerical value. Work ratio is higher for thermal power plant or it is higher for a gas turbine power plant? Sir, I'm not sure about it. अच्छा, आपने एक पीक लोड पावर प्लांट सुने होंगे, पीक लोड? Peak load, sir, power plant. हाँ, thermal power plant is a peak load plant or base load plant? Sir, नहीं सुना sir. You have not heard about peak load or base load plant? No, sir. You heard about diversity factor associated with the power plant? Diversity factor? No, sir. Actually, sir, I read power plant up to like what is asked in GATE only. Okay. So what do you understand by boiler mountings? Boiler mountings are sir, those necessary equipment which are used in a boiler. Without it, the boiler cannot operate. तो एक फ्यूजिबल प्लग होता है, फ्यूजिबल प्लग क्या है? ये बॉयलर माउंटिंग्स है या एक्सेसरी है? सर माउंटिंग है. कैसे काम करता है? Sir, if the water level in boiler is much lower the required level, so the heat generated by combustion can damage the boiler parts. So the job of fusible plug is to melt in such a condition so that it will stop the combustion action only. अच्छा, एक Babcock's and Wilcox boiler होता है, so it is a fire tube boiler or water tube boiler? Sorry, sir, I don't know. What is the difference between fire tube and water tube boiler? Sir, in a fire tube boiler, the water is inside the boiler shell and exhaust gas of combustion flows in the tubes. And in water tube boiler, water flows inside the tubes and combustion takes place inside the shell. It is a high pressure or low pressure? Low pressure boiler. Sir, which one? Babcock's and Wilcox. Sir, I don't know. You know, in gas turbine power plant, can you tell me the difference between open cycle and closed cycle gas turbine? Yes, sir. Open cycle is
used mostly in aeroplanes because it is lightweight and the circulating fluid is basically air and the combustion products. And ठीक है, closed cycle can be used on land where we can, the circulating fluid can be anything and it can also be inert gas, and much higher quality fuels can be used like natural gas and methanes for combustion. what do you understand by optimum efficiency? Optimum efficiency of a Brayton cycle. The optimum efficiency is that efficiency which gives us maximum work. It is not usually at the highest pressure ratio. It is in Can you give me some expression for the optimum efficiency of a simple Brayton cycle? Optimum efficiency of single, it is 1 minus root of minimum temperature upon maximum temperature. तो कैपेटिव पावर प्लांट सुना आपने? You heard about captive power plant? No, sir. चलो, ठीक है. So in gas turbine power plant, which particular gas we use as a fuel? Sir, we usually use inert gases like helium and argon. Helium, iron को use, helium और या argon को use करेंगे. These are combustible gases. Sir, you are asking that we use fuel कैसा use करते हैं? चलो fuel बताओ. Fuel natural gas, methane. Natural gas. हाँ जी sir. So can we use solid fuel also in gas turbine power plant? Sir, solid fuel. Sir, we can use, but since it has like very low calorific value as compared to natural gas, so efficiency will be low. ठीक है, ठीक है अभिनव, अभी मैं फीडबैक देता हूँ आपको. हाँ यस सर. चलो, ठीक लग रहा है. वैसे आप ना ये मत बोलो कि सर मैंने वही प्रिपेयर किया जो गेट में आता है. यस सर. है ना, ये वर्ड मत यूज करो. चूज सम डिफरेंट वर्ड. आप बोल सकते हो कि सर आई रिवाइज्ड दिस टाइम सर फॉर दिस इंटरव्यू. आई रिवाइज्ड द मेजरली द गैस टर्बाइन एंड द थर्मल पावर प्लांट, स्टीम टर्बाइन पावर. है ना, ये बोल दो. गेट सिलेबस मत बोलो आप, है ना, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा. बाकी थोड़ा सा ये तो पढ़ो आप यार, ये फैक्टर वगैरह पढ़ के जाओ. लोड फैक्टर, लोड कर्व क्या होती है. जो आपका गैस टर्बाइन पावर प्लांट है, इसको पीक लोड पावर प्लांट बोलते हैं. पीक लोड पावर प्लांट वो पावर प्लांट होते हैं जिनको आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो, इजीली शट डाउन कर सकते हो. तो पीक लोड पावर प्लांट के लिए इकोनॉमी मैटर नहीं करती. मैटर क्या करता है? उनका स्टार्टअप हो या शट डाउन टाइम. जो बेस लोड पावर प्लांट है, दे एक्चुअली दोज आर द प्लांट जिसपे हमेशा लोड रहता है. तो बेस लोड पावर प्लांट कौन कौन से होते हैं? जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है. दीज आर नोन एज बेस लोड पावर प्लांट. बेस लोड ही उसको बोलते हैं द लोड व्हिच विल बी ऑलवेज देयर ऑन द पावर प्लांट. पीक लोड बोलते हैं द लोड व्हिच विल बी देयर ऑन द प्लांट फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो बेस लोड पावर प्लांट का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? इकोनॉमी. इकोनॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए. स्टार्ट डाउन, शट डाउन कुछ भी हो. पीक लोड पावर प्लांट के लिए द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज व्हाट? स्टार्ट होना चाहिए. इकोनॉमी वो, क्योंकि उनको रन बहुत थोड़े टाइम के लिए रन करना है. कैपेटिव पावर प्लांट होते हैं द पावर प्लांट which are there at a particular location to meet the energy requirement of a specific area. जैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, जैसे स्टीम इंडस्ट्रीज हैं या कोई ONGC में, suppose because you know suppose they are carrying out some kind of distillation process, so internal there is huge requirement of a particular industrial space. तो उसको मीट करने के लिए sometime industries go with some kind of power plant which is going to meet their own industrial requirement. तो उसको बोलते हैं कैपेटिव पावर प्लांट. अरे कोई भी हो सकता है, मतलब स्टीम, गैस, कुछ भी हो सकता है. मेजरली थर्मल होते हैं. अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो अब इंडस्ट्रीज तो 24 घंटे चलने वाली है ना. ऐसा तो नहीं होगा कुछ टाइम चलाओगे आप.
Yes, you sir. will go with the better economy ना, एफिशिएंसी जो आपका रनिंग कॉस्ट है वो कम आना चाहिए। तो जो गैस पावर प्लांट है उनका रनिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं है, उनको बहुत हाई कैपेसिटी के पावर प्लांट यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट गैस पावर प्लांट, Okay. उनको वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे बिकॉज इंस्टॉलेशन इज वेरी इजी, Mm-hmm. shutdown startup time is very less, Yes, sir. but their efficiency is not that much good, great. सर Work मतलब आप बोल रहे ratio, कैपेटिव पावर प्लांट गैस पावर प्लांट्स होते हैं जनरली। नहीं कैपेटिव मतलब मैंने क्या बताया कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया की आपको इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो मेजरली वो मतलब थर्मल पावर जनरली प्लांट्स होते स्टीम हैं, होते हैं कि गैस होते स्टीम हैं? स्टीम बेस्ड। स्टीम, ठीक है। जो वर्क रेशो होता है ना वो क्या किसका रेशो होता है, द रेशो ऑफ द नेट वर्क टू द टरबाइन वर्क, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क Yes. टरबाइन वर्क। अब होता क्या है कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें आपका पंप का वर्क तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, Yes, sir. तो नेटवर्क क्या होगा, डब्ल्यू टरबाइन माइनस डब्ल्यू पंप बाय डब्ल्यू टरबाइन, तो वर्क रेशियो बहुत हाई होता है इन द रेंज ऑफ 97-98। Okay. बट अगर मैं बात करूं वर्क रेशियो की ब्रेटन साइकिल के लिए, गैस टरबाइन पावर प्लांट के लिए, तो वहां पे नेटवर्क क्या होगा, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर वर्क सिग्निफिकेंट रहता है, तो इसलिए वर्क Yes, sir. रेशियो गैस टरबाइन पावर प्लांट का बहुत लो होता है, कोई आप बोल सकते हो 50 to 60%। Okay. और 1 माइनस वर्क रेशियो को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बैक वर्क रेशियो। बैक वर्क। Yes. कूलिंग टावर में वो पढ़ के रखो थोड़ा सा, अप्रोच रेंज वेट बल्ब टेम्परेचर मिनिमम क्यों मिलता है, क्योंकि एयर आपका सैचुरेट हो जाएगी। आपको पता है Yes, sir. जहां पे एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो एयर बिकम सैचुरेटेड, तो उसके बाद इवोपरेटिव कूलिंग होगा ही नहीं। इवोपरेटिव कूलिंग होने के लिए क्या चाहिए, इवोपरेटिव कूलिंग होता है ना, आपने खुद बताया, इवोपरेटिव कूलिंग कब तक होगा, जब तक एयर सैचुरेट नहीं हुई है, जैसे ही एयर सैचुरेट हो जाएगी तो व्हाट द इवोपरेटिव कूलिंग विल स्टॉप, Yes, sir. तो कूलिंग स्टॉप हो जाएगी तो टेम्परेचर उससे कम जाएगा ही नहीं। Yes, sir. तो थोड़ा सा इसको देखना है आपको अभिनव, ठीक ठीक है। है सर। Yes, sir. दिस टाइम आई एम नॉट गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस व्हाट आई आस्क्ड यू, बट पल्वराइजेशन था, जैसे ऑयल के क्लासिफिकेशन है, because when you are going for any oil and gas company some idea you need to have related to different kind of fuels। अब उन gases का calorific value कैसे measure करते हैं, what kind of calorimeter we use to measure the calorific value of gaseous fuels, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, और Yes, sir. ये थोड़ा सा जो मैंने आपसे पूछा था ऑयल के क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। ठीक है सर। चलो बाकी ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी और बढ़ाओ यार, अभी तो आपका थर्ड मॉक था ये, आज स्नैप था, Yes, sir. तो थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाओ, थोड़ा सा आप बहुत कॉन्फिडेंट होके नहीं आंसर करते हैं ना, थोड़ा सा पिच जो है और स्ट्रॉन्ग रखो, अपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्गली रखना है। देखो जितना आपने पढ़ लिया ना दैट इज सफिशिएंट, मैं बताऊं आपको अभिनव, Yes, sir. उन्हें सही है, उनको लगना चाहिए कि यस दैट पर्सन इज हैविंग सम कैपेबिलिटी, है ना, इसको आप ये जिम्मेवारी ले लेगा, ये कम्युनिकेट कर पाएगा इफेक्टिवली दूसरों के साथ, और उनको उनसे काम भी ले पाएगा, उनको डील भी कर पाएगा कॉन्फिडेंटली, तो उनको Yes, sir. थोड़ा सा वो आपके लीडरशिप क्वालिटीज भी चाहिए, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है आप में बिकॉज यू क्रैक्ड गेट विद वेरी गुड गेट स्कोर, Yes, yes, sir. नर्वस नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, एक अपना एक नेचुरल वे होता है आंसरिंग का, वही रखना है, ठीक है। तो यू नीड टू थिंक एक्चुअली कि ये आपका नेचुरल वे है या आप थोड़ा सा और लाउडली या और कॉन्फिडेंटली बात करते हो, ठीक है अगर सर। करते हो तो फिर आपको इंप्रूव करना चाहिए, बट इफ इट इज योर नेचुरल वे ऑफ कम्युनिकेट देन ठीक है, फिर आप इसको बहुत ज्यादा चेंज कर भी नहीं पाओगे, Yes, sir. ठीक है। चलो तो थोड़ा सा क्या करना है, जो मेरा क्रक्स क्या है, आप कन्विंस नहीं करते हैं ना, थोड़ा सा आप आंसर करके रुक जाते हो, यू नो टू ट्राई टू कन्विंस द इंटरव्यूअर, बिकॉज फाइनली यू नो टू सेटिस्फाई हिम, Yes, sir. उसको वो कन्विंस हो जाएगा देन ही विल गिव यू द जॉब, है ना, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक जो जिस जोन में आप आंसर कर रहे हो उससे बाहर निकल के भी आपको अप्रोच करके उसको कन्विंस करने की कोशिश करना पड़ेगा, फॉर दैट यू नीड टू पुट द एफर्ट्स, ठीक है अभिनव, आई होप यू गॉट द पॉइंट, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग फर्दर, इफ यू फेस एनी डाउट क्वेरी और इफ यू वांट अनदर snap you can join me again, good luck। Okay, sir.